Welcome to this Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं वी रवि कुमार। The stories that we are tracking in this edition of Market Mantra: Asian stocks log gains, European share markets witness losses, and Brent crude prices rise around 4.5% to trade above the $102 per barrel mark. एशिया के शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा, लेकिन यूरोपीय शेयर बाजार गिरावट में रहे और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य लगभग 4.5% बढ़कर $102 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजारों से। एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख था। जापान का निक्केई सूचकांक 1.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.1% की बढ़त में रहे। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की वृद्धि में रहे। दक्षिण कोरिया के बाजार में आज कारोबार नहीं हुआ, लेकिन यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां गिरावट का रुख था। लंदन का फुटसी 1% की गिरावट पर था, जर्मनी के डैक्स में 2.5% की गिरावट थी और फ्रांस के कैक में 2.8% की मंदी थी। सुषमा जी, हालांकि आज भारतीय बाजार बंद थे महाशिवरात्रि के कारण, लेकिन अगर हम एशियाई क्षेत्र में देखें तो वहां पर हमने आज बढ़त का रुख देखा है। कल भारतीय बाजार में भी बढ़त थी। कैसे देख रही हैं अभी की स्थिति को? जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूक्रेन और रशिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके आप क्या असर पड़ता हुआ देखती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पे और खासकर भारत पे? देखिए, आज आपने बात की जो एशियाई शेयर मार्केट है, चाइना और साउथ कोरिया सबके थोड़ी सी ऊंचाई पे हैं और कहा जाता है कि जब भी कोई वार होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पहले 1-2 दिनों में स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाती हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से बढ़त हो जाती है और स्टॉक मार्केट्स की रिवाइवल हो जाती है और ये आप देखने को मिल रहा है एशियाई शेयर मार्केट। खैर, यूरोपीय शेयर मार्केट्स थोड़ी सी डाउन है, लेकिन फिर भी इतनी क्रैश नहीं है जितना शुरुआत में हुआ था। तो ये है कि जो डेवलपमेंट्स हैं वो फैक्टर इन कर लेती हैं स्टॉक मार्केट्स। तो और आगे वाले दिनों में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ये बात नहीं है, लेकिन शायद वो क्रैश नहीं होगा जो पिछले हफ्ते हमको देखने को मिला था। और मेन क्या पहलू हैं कहीं की सिचुएशन के जो हमें अफेक्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं। अब ये हो गया है कि यूरोप और वेस्टर्न नेशंस ने सैंक्शंस शुरू कर दिए हैं रशिया के खिलाफ। अब जब सैंक्शंस शुरू कर दिए हैं तो इसका असर खैर इमीडिएट तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो होगा। पहली बात, मैं सैंक्शन से पहले बात करनी चाहिए तेल और गैस के दाम जो हैं, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल और गैस का और उसका अगर तेल और गैस ठीक मतलब फ्लो ना करे तो फिर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाता है और एकदम से ये विश्व स्तर पर जो दाम है बढ़ गए हैं। जो साइकोलॉजिकल बैरल $100 पर बैरल वो तो क्रॉस कर गया है मार्केट। ब्रेंट क्रूड बेंचमार्क क्रूड जो है उसका ये $100 पर बैरल का बेंचमार्क क्रॉस कर गया है और आने वाले दिनों में लोग मतलब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद 1-2 महीने में शायद $125 तक भी पहुंच जाए। लेकिन इसमें ये अभी ये देखना ये है कि और भी इसके यूक्रेन और रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो तेल के ऊपर असर करेंगे। एक तो बात ये है कि ईरान के साथ जो बातचीत हो रही है वेस्ट की, यूएस और बाकी यूरोपीय देशों की सैंक्शंस के बारे में कि हम सैंक्शंस आपके फिर से विड्रॉ कर ले, तो वो लगता है कि ये जो बातचीत है शायद फाइनलाइज हो रही है कुछ दिनों में और ईरान का जो तेल है शायद
मार्केट में आ जाएगा। ईरान का तेल अगर आ जाए, और मैं अब 2-3 महीने आगे की बात कर रही हूं, अगर वो आ जाए और शायद, तो फिर काफी असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर। दूसरी बात यह है कि इमीडिएटली अमेरिका ने ये तय किया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से शायद 60 मिलियन बैरल्स रिलीज करेगा मार्केट में। ये इसलिए क्योंकि ओपेक प्लस ने ये तय कर लिया कि वो अपने जो उत्पादन है वो बढ़ाएंगे नहीं। हालांकि जरूरत है, हालांकि दाम ऊपर जा रहे हैं, मार्केट में बहुत ऊंचे जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा $100 पर बैरल, तो ये अमेरिका ने तय किया है। और साथ ही जो बाकी बड़े इंपोर्टिंग देश हैं, जैसे कि इंडिया, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान, वो भी थोड़ा थोड़ा तेल मार्केट में रिलीज करेंगे। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी ठंड पड़ जाए। Sushma ji, we looked at the Asian markets which are today logging gains, and even the Indian markets had logged some gains after some initial fall. There have been a lot of investors who come into the Indian market post the March 2020 crash when the COVID pandemic hit, and many of them entered at 26,000, 30,000, those kind of levels of Sensex, and all of them have got clear profits since then. Yes. So in these set of investors and the newer investors, there seems to be embedded a belief that the markets will rebound. Is that a fair expectation given the entire, because the difference that I see from that time to now is that many economies, especially developed economies, are looking at 40-year high inflation levels, 20-year high inflation levels. Is that expectation? Because I talk to a lot of people, they say, nahi, wapas aa jayega. Is that a fair expectation? Well, see, I think what is interesting, this is in fact what you have said, there's quite a discussion about this. What will happen to these retail investors who have come into the market and have till now had a brilliant run, a bull run right on from March 2020 onwards? And I think what I find some experts are rightly pointing out that, he says, like when we were young and we made mistakes, we also learned from them. He says these retail investors may also make some mistakes now, and they will learn from them. So this is the crisis that they will all have to face. Now, whether they hold on to their stocks or whether they sell their stocks in panic, he says for them it is going to be a learning process. And as for but he also said, and I think this is as you yourself said, you talked to so many people, most analysts are anticipating that after this hiccup, let us say, or maybe it may be a longer hiccup, may take some time for the world economy to recover from this, the Indian stock markets will continue to be on an upward trend, on a bullish run is still anticipated, simply because we are an emerging economy. We are an economy where the fundamentals are always looking a little better. We are on a growth path that is looking good. We have certain weaknesses, of course. One of the big weaknesses is that we are not creating enough jobs. Hopefully the budget, which has put a push on infrastructure, should try and redress this particular problem. But in the long run, we are talking long run, not even medium, but the long run, there is an anticipation that the Indian stock markets will continue to be on an upward trend. And whether we were looking at the live broadcast of the European Union Parliament, and also there seems to be a lot of enthusiasm, if I might use that word, for sanctions on Russia. And initially Biden said we won't be including SWIFT, but later on SWIFT also at least partially is included in the sanctions. Now these sanctions are now real, but there would obviously be, because we are in an interconnected economy, there would be spillover immediately to the European banking and probably later to the world banking as well. If this continues longer than because everybody was saying by Friday it will be over. Now we are already in Tuesday. Correct. And we don't know when it will be over, although many people say it will be over today. But if this lasts, let's say, a week or 10 days more, what will be the spillover effects to, let's say, European banking and thereafter to the world banking? What could be the effects? See, first of all, we must understand what is SWIFT. SWIFT is actually not a payment system, as people are saying. It is actually a messaging system. It verifies the transactions and ensures the authenticity of each transaction. But of course, it's very, very critical to cross-border transactions. So it is very interesting that they have. If you see the statement on the sanctions, they say that some Russian banks have been not allowed to use. They will not be given the facility of SWIFT. SWIFT is based in Belgium. But
Europe has given an exception as far as their payments to Russia for oil and gas supplies are concerned. So the oil because currently Russia is supplying roughly about 30 to 40% of the energy needs of European countries. In the case of Germany, it is even higher, roughly about 50%. So if they try and stop the SWIFT messaging system there, I mean, they obviously they would have to pay for oil and gas. That tap of oil and gas would be turned off, and that would be an extreme crisis in Europe. So they have given that exception so that Russian oil and gas continues to flow to European countries, and payments are continuing to go via SWIFT via the messaging system to Russia. That's number one. Number two is that there are some alternative messaging systems which have been put in place. Some have been put in place by Russia and some by some other countries. These are systems which could be resorted to by Russia with its trading partners for its payments. Thirdly, as far as India is concerned, India has a system of payment to Russia through the rupee-ruble route, that rupee payment route. And we have done that in the case of arms. We have done that also for Iran when we needed to deal with Iran, Iran had sanctions against it. So we used that route for payments to Iran. So the finance minister has already announced yesterday that one bank has been specified where we will start, trying and increasing the extent of rupee-ruble payments, because right now, of course, it's limited because, they would prefer to buy in dollars. So I think that the impact, for instance, on India, which is what we are really concerned about, is not going to be so much, but it could be for European countries, which require a lot of things, commodities from Russia, and will now have to start looking for alternative places, and they will have to make payments for them. So that's more a European problem than ours, or American problem. And also the exchange rate, Monday, I think ruble fell 30%, and yes. Today it's up 6%. Will that also creep? Because I remember when the Russian ruble controversy initially happened, that exchange rate became a big sticky point with all this volatility. Could that also have an impact? Yes, of course. You see, ruble will obviously crash because of these problems. But you talked about the fact that the war may be over. The war could be over in a few days. The war could take several weeks. I don't think it will take more than a few weeks. But it will, if it takes longer, then the longer it takes, the more the sanctions will hit Russia. Because on an immediate basis, these sanctions are not going to hurt Russia much. For instance, if we want to import, or any country wants to import fertilizers from Russia, and that's a big issue. It's not just India which is importing fertilizer from Russia. A lot of countries are importing fertilizers from Russia, and they are all concerned about this issue. So you don't worry about if fertilizer imports are stopped for 1, 2, 3, 4 weeks. You are not worried. It's only when you reach the 5th week that you start getting worried. So the sanctions will start having an impact really on Russia only after about 4 to 5 weeks. जो आपने भी डिस्कस किया, रूबल में 30% के करीब गिरावट आई है, और इसके बीच रशिया ने अपने इंटरेस्ट रेट्स 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिए हैं. आपको लगता है इसका कोई कंटेजियन इफेक्ट होगा क्या? हम भारत में या और देशों में भी इंटरेस्ट रेट्स में जल्दी बढ़त की आशंका कुछ पैदा होती है? A lot of people have been asking how to make FDs in Russia now. ये अच्छा आइडिया है. लेकिन अब हमारे देश में अभी भी अब तक ये सोच थी कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी सेंट्रल बैंक्स की तरह अपने इंटरेस्ट रेट्स अभी नहीं बढ़ाएगा, कि फोकस उनका ग्रोथ के ऊपर है और वो कॉमोडेटिव स्टैंस अभी कुछ दिनों के लिए रहेगा. लेकिन अब जो इन्फ्लेशन का असर वो तेल के दामों की वजह से जरूर आएगा हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर. और अगर इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई जरूर इंटरेस्ट अकोमोडेटिव पॉलिसी को छोड़कर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगा. तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है अभी तक, जैसे मैंने कहा, इट हैज बीन एन आउटलायर, और वो इसका मतलब है कि बाकी सेंट्रल बैंक्स जो हैं जिन्होंने
अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं उनके साथ में उसी ट्रेंड में वो जा रहा होगा, क्योंकि अब बाकी देशों में भी जैसे आपने अमेरिका की कहा कि कई 30-40 साल के बाद इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं विश्व भर में, और मेरे ख्याल में आरबीआई को भी करना पड़ेगा, और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ये ज्यादा तेजी आ जाएगी इस मामले में। We'll continue discussing the business stories of the day after a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। सुषमा जी, आप मैक्रोस की बात कर रही थी। कल एनएसओ के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आए हैं जीडीपी के, और दिसंबर क्वार्टर के जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5.4% का आंकड़ा आया है, और पूरे वित्त वर्ष के लिए जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है उसके लिए उन्होंने 9.2% से घटाकर 8.9% कर दिया है अपने जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट को। तो अगर हम दूसरे मेट्रिक ग्रोथ की बात करें, अभी हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ का जो अभी आंकड़ा है वो डेफिनेटली ये इंडिकेशन दे रहा है कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट दोनों ही शायद जारी रहने चाहिए। बहुत एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन आप कहेंगी आरबीआई के लिए? बिल्कुल, आरबीआई के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, और ये जो आंकड़े आए हैं उसमें यही दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी इसमें इतना स्लो डाउन नहीं है ग्रोथ का, जिससे हमें कोई मतलब कंसर्न की बात बहुत ज्यादा नहीं है। 9.2 से 8.9 आ गया है, और ये कंसर्न की बात अब इस साल होगी। अब मार्च में हम अप्रैल में हम जब आ जाएंगे, तो ये कि अगर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी रहेगा, फिर इसका असर और होगा। अब जैसे मैंने पहले एक चीज तेल के दामों की बात की, अब तेल के दाम अब बढ़ गए हैं $100 के करीब, और बजट में उन्होंने ये अनुमान लगाया था, हाँ बिल्कुल, 70 to 75, हाँ $70 to $75 पर बैरल पूरे साल भर में होगा। और अगर ये $100 या $125 तक पहुंच जाए, तो सारे जो बजटरी कैलकुलेशंस को आपको रिवर्क करने पड़ेंगे। You mentioned oil. We are joined online by energy expert Narendra Taneja. Mr. Taneja, welcome to Market Mantra. Thanks for having me. We are looking at the oil prices today surge around 4.5% as concerns over potential supply disruptions after Russia's military operation in Ukraine and related sanctions are outweighing talks of a coordinated global crude stocks release. We were discussing earlier in the program that there is the Iran discussion also happening in Vienna, and there are other factors. How do you see this playing out in the short term over the next 2 to 3 months? Because there is a lot of imported inflation we have, and that's largely due to oil. Well, that is true. I mean, the inflation situation in most countries is very difficult these days, as you know. But when coming to oil prices, I mean, it all depends on how situations, develop over Ukraine. I mean, the West is, of course, so far oil and gas are exempted from the Western sanctions. But if oil and gas, they decide that, oil and gas are going to be part of the sanctions, then, of course, this would be a very bad news. So for the reason that oil prices are kind of, have not crossed a certain limit, they have crossed 100, but in such a situation, otherwise prices would have gone already touched $120 per barrel. But the response so far is a little bit restrained in terms of, price movement, because oil and gas are exempted. But now there are reports now that the Western countries are going to actually impose sanctions on oil and gas too, and it might come any day. If that happens, then I think oil prices may, go like $100, $120 per barrel and so on and so forth. But at the moment, it all depends on this thing. If you go strictly by demand and supply fundamentals, there is absolutely no reason for oil to be any, even $80 per barrel. If you go by demand supply fundamentals, the price should be in the region of about $75, $73 per barrel, not more than that. But then oil is a political commodity, where whenever there is a geopolitical anxiety or stress, oil response is always panic.
and that's how it has always responded. But my own sense is, if oil continues to be exempted, then we don't need to worry too much. Price may still be in the region of $95 per barrel, but not worry too much. But if there are sanctions imposed against oil, against Russia on oil, then I think we are in a very difficult zone. So, Mr. Taneja, sanctions oil sector पे लगेंगे कि नहीं, that we'll have to wait and watch. अगर हम US शेल ऑयल की बात करें, आपको लगता है कि इस प्राइसेस पर US शेल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो बाजार में प्राइसेस पर एक डाउनवर्ड दबाव डाल सकता है आने वाले दिनों में? और एक एनालिस्ट ये भी बात कर रहे हैं कि इतने हाई प्राइसेस पर डिमांड डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जिसके चलते भी प्राइसेस नीचे आ सकती हैं. इनके बारे में आप क्या कहेंगे, इन व्यूज के बारे में? देखिए, जहां तक शेल की बात है, शेल इसका उत्पादन तो अमेरिका में बढ़ता है, ये कीमत बढ़ती है तो शेल का उत्पादन बढ़ जाता है. लेकिन जो रूस है वो लगभग 11 मिलियन बैरल्स का ऑयल प्रोड्यूस करता है और 80 लाख बैरल प्रतिदिन वो एक्सपोर्ट करता है. अगर वो तेल बाजार से गायब हो जाता है तो कोई देश उसकी भरपाई नहीं कर सकता है. ईरान अधिक से अधिक जो है वो 20 लाख बैरल मार्केट में ऐड कर पाएगा अगर सैंक्शन हट जाए तो. और अगर अमेरिका अपना उत्पादन बढ़ाता है, सऊदी अरब बढ़ा, उसकी सीमा है. डिमांड डिस्ट्रक्शन की इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुनिया जो है वो रिकवरी हो रही है, कोविड से वापस आ रही है और तेल की मांग लगातार बढ़ रही है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है और भारत में आने वाले समय में जो मांग जो है नॉर्मली नहीं हो जाएगी बल्कि 4% और बढ़ जाएगी. तो ऑयल का अभी कोई विकल्प नहीं है. इसलिए अगर जो है रशिया को लेकर या सप्लाई पे बहुत दिक्कत आती है तो कीमतें बढ़नी ही बढ़नी है. ये बात दूसरी है कि उसके ऊपर अंकुश लगाएगी अमेरिकी सरकार वगैरह वगैरह, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, लेकिन उसके बावजूद कीमत तो बढ़ेगी. कि हमने देखा जब भी अमेरिका में संसद के चुनाव होते हैं तेल सस्ता होता है, लेकिन अब यूक्रेन की सिचुएशन में डेवलप होता है. ये कैसे डेवलप होता है इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन फिलहाल ऑयल की कीमतें एक बहुत डिफिकल्ट जोन में और जो बड़े आयातक देश हैं उनके लिए जो है थोड़ा परेशानी का सबब. Mr. Taneja, there is a lot of talk, even Biden was mentioning it, strategic petroleum reserves of various countries being released to mitigate the situation. Would that have an impact or that's just... Well, you see, that's mostly used for, let's say, to kind of manage prices. When prices go beyond a point, they do that. You release a little part of it, maybe 10%, 20% of your reserve. But reserves are meant, for the kind of situation the world is into today, over Ukraine. So even if, for instance, you've released 10%, 20%, you go even up to 40%, then you will need to buy a lot from the market to basically refill. So economics is the same. It is that, it serves a temporary purpose maybe for a week or 10 days or all, but a situation kind that we are into now, for that the important thing is that geopolitical situation over Ukraine stabilizes. If it does not stabilize, going to be a kind of military confrontation between East and West, then of course we are talking a very difficult situation. But as I said, there would be supply concerns. Right now the demand is only going to go up. And if there is any supply disruption, then the price will start moving further in the northward direction. मिस्टर तनेजा, जो तेल की कीमतों का जो सीधे कहें कि पेट्रोल और डीजल का अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर बात करें, जो सीधा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे होता है, उसको देखते हुए क्या सरकार के पास आपको लगता है कि अभी कोई स्कोप है, फिस्कल रूम है एक्साइज ड्यूटी में और राहत देने का? देखिए, जो एक्साइज को हमेशा जो है यूज किया जाता है इसलिए कि जब कीमतें बहुत ज्यादा हो जाएं तो एक्साइज कम कर दो, कीमतें बहुत कम हो जाएं तो एक्साइज लगा दो. आपने पिछले 2 साल में देखा ये कई दफे हुआ है, लेकिन बहुत स्कोप नहीं है क्योंकि सरकार के भी खर्चे बढ़े हुए हैं, तमाम स्कीम है, कोविड, लोगों को खाना दिया जा रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए. लेकिन उसके सबके बावजूद केंद्र सरकार को अगर कीमत जो है वो $110 पर बैरल होती है या वहां पे भी टिकती है तो आपको एक्साइज केंद्र को कम करनी ही पड़ेगी मजबूरी में आकर के. और जो राज्यों को भी कहीं ना कहीं अपने टैक्सेस कम करने पड़ेंगे क्योंकि इसके अलावा जो आप 85% तेल मंगाते हैं अगर उसके दाम जो है वो तो वही रहेंगे, उसमें तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते. तो एक्साइज है, लेकिन एक्साइज में भी केंद्र की एक सीमा है. कितना केंद्र एक्साइज कम कर लेगा? ₹7 और ₹8 और ₹12 और इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा. अगर करेगा तो बाकी जगह परेशानियां खड़ी हो जाएंगी. राज्यों की स्थिति भी लगभग वैसी है, ज्यादातर राज्यों की. तो इसलिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को कम रखे उसके लिए भारत, चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान को मिलकर कुछ काम करना पड़ेगा. क्योंकि जब भी मार्केट में कीमत बढ़ती है या अभी जो बढ़ी इसलिए नहीं बढ़ रही है कि तेल की कमी हो गई, इसलिए कि स्पेकुलेटर्स, मार्केट में प्ले करने वाले लोग वो उसका फायदा उठाते हैं और जो बड़े प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया जैसे वो उसका फायदा उठाते हैं. इस युद्ध के बावजूद रूस पैसा कमा रहा है क्योंकि तेल ऊपर जा रहा है.
सऊदी अरेबिया, तो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत करके थोड़ा दबाव लगा के मैनेज करना भी उसके साथ जरूरी होगा. Thank you, Dr. Taneja, for joining us live. That was Dr. Narendra Taneja, energy expert, who was giving his views on the oil situation, on the energy situation. And of course, in intraday trade, Brent crude was trading around $102.50 per barrel, while WTI crude prices were at $99.40 per barrel. Let's also look at the U.S. stocks. Wall Street's main indices traded mixed yesterday. The Dow and the S&P 500 fell in volatile trading, with bank stocks leading the drop as investors digested powerful Western sanctions against Russia. The blue chip Dow Jones ended 0.5% down and the S&P 500 fell 0.2%, while the Nasdaq composite indices climbed 0.4%. And Sushma, we are seeing that S&P, Nasdaq, Dow Jones, all in early futures are again down today. What is the cause for this division between Asian, which is going up slightly, and US, which is coming down slightly? I think it's very clear that, it's a question of geographical distance. Asia is fairly far away from the actual site of the conflict, and Europe and the US are closer. US may not, of course, also is fairly distant, but it is more closely linked to the events that are taking place over there. And a lot of the issues, especially on oil, because the US is a major oil exporter, producer and exporter, it's a very sensitive issue over there. So, of course, it has to be remembered that the US also is now going through some kind of churning, with the Federal Reserve having decided to cut back on its easy money policy, have decided to increase interest rates. So things are in a state of flux. They are also coming back to normal, and suddenly this has happened. I think we cannot forget that Russia is a leading supplier of a large number of commodities. First of all, wheat. It is, along with Ukraine, it's a very, very major wheat exporter. In fact, people are now saying that, India can look at, becoming an alternate, can find more markets in case there's a problem with Russia. Fertilizers, as I said, Russia supplies fertilizers to the entire world and the Ukraine. So not just India, the US is worried, Canada is worried, many countries are worried about fertilizer supplies. They are also large producers of aluminum. Now, India, for instance, is we are self-sufficient in aluminum, but in recent years we have been importing a lot of aluminum scrap. Now, because of the conflict, and the conflict has been building for quite some time, prices of aluminum as well as nickel. Russia is a very major exporter of nickel. So prices of both aluminum and nickel are ruling at multi-year highs. These are elements which are used in industries, across the board. So apart from that, there are precious metals like palladium and platinum. Palladium is used for catalytic converters and hydrogen cells. आपने प्रेशियस मेटल्स की बात की, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,924.60 प्रति आउंस पर था. चांदी भी बढ़त दर्ज करते हुए $24.70 प्रति आउंस पर थी. ब्रीफली आप क्या कहेंगी, अभी सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में आपको लगता है कि सोने की मांग रहेगी और प्राइसेस बढ़ेंगे? देखिए, प्राइसेस तो अभी बढ़ेंगे और ये इसके ऊपर निर्भर है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या कम होगा. सोने के दाम कम हो गए थे 3-4 महीने पहले, अब फिर बढ़ गए हैं, तो ये इसके ऊपर निर्भर है कि जैसे आपने कहा सेफ हेवन एसेट जी, बिल्कुल. सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए. Thank you, Sushma ji, for being live, and it's always more invigorating when it is live. Before we close, a reminder of the headlines. Asian stocks log gains, European share markets witness losses, and Brent crude prices rise around 4.5% to trade above $102 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.